Assalamu alaikum dear students. In the previous class, we have actually discussed about the direction angles and direction cosinus of a vector and how to obtain the direction cosinus of a vector when the vector has been actually expressed in terms of its rectangular components and the regarding observations that we have discussed in the previous class. So if a vector v makes angles alpha, beta and gamma with the positive directions of x-axis, y-axis and z-axis respectively, then alpha, beta and gamma are called the direction angles of this vector, and ordered three tuple of cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosinus of the vector. And we have calculated these direction cosinus. The first direction cosine is equal to its first scalar component divided by its modulus. Its second direction cosine is equal to its second scalar component divided by its modulus. और इसका तीसरा direction cosine जो आ रहा है that's equal to it is third scalar component divided by its modulus or magnitude. तो ये हमने previous classes में calculate कर रखे हैं. और प्रीवियस क्लास में हमने ऑब्जर्वेशंस भी पढ़ी थी रिगार्डिंग दैट डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ अ वेक्टर. पहली ऑब्जर्वेशन जो पढ़ी थी दैट इज cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is always equal to 1. That is the sum of squares of direction cosinus of a vector is always equal to 1. And similarly sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma that's equal to 2. And final, the third one observation which was very much important, that is if you have to find a unit vector along any vector, then the scalar components of that unit vector must be the direction cosinus of a proper vector v. So if you have to locate the direction cosinus of a vector, you need to find the unit vector along the direction of that vector, और जो उस यूनिट वेक्टर के होंगे स्केलर कंपोनेंट्स वही उस प्रॉपर वेक्टर के होंगे डायरेक्शन कोसाइनस. तो ये था डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइनस. ना इसी पे यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आज का क्लास होगा एक्सरसाइज 10.2 from question number 12. So what it says that find the direction cosinus of the vector I plus 2j plus 3k. We have a given vector and we need to find its direction cosinus. So इसको डिनोट करेंगे सपोज v से. let v be the given vector. Let v is equal to I plus 2j plus 3k be the given vector. Given vector जो है उस गिवन वेक्टर को हमने डिनोट किया है v से. सो v इज इक्वल टू I plus 2j plus 3k. नाउ वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ दिस वेक्टर. हमें डायरेक्शन एंगल्स निकालने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली इस वेक्टर द direction cosinus of a vector are the scalar components of its unit vector. So we need to first calculate the unit vector along the direction of v. और जो उस unit vector के होंगे स्केलर कंपोनेंट वही इस प्रॉपर वेक्टर v के होंगे डायरेक्शन कोसाइनस. सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ v. हमें डायरेक्शन कोसाइनस चाहिए. सर हमें डायरेक्शन कोसाइनस चाहिए. हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूनिट वेक्टर के जो होंगे स्केलर कंपोनेंट वही वेक्टर v के होंगे डायरेक्शन कोसाइनस. So therefore unit vector along the direction of vector v is equal to unit vector जो along the direction of vector v होगा उसको हम डिनोट करेंगे v कैप से. So v cap must be equal unit vector along the direction of vector किसके बराबर होता है? 1 divided by magnitude of that vector into vector. So 1 divided by उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 डिवाइड बाय या वेक्टर v डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. एक वेक्टर को डिवाइड करना है खुद के मैग्नीट्यूड से. तो जहां से ये जो रिजल्ट यहां पे आएगा दैट मस्ट बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर v. So that's equal to 1 divided by magnitude of vector v. V is a vector expressed in terms of its rectangular components, expressed in terms of its scalar components. Now, when a vector has been expressed in terms of its components, what would be its magnitude? Yes, non-negative square root of sum of squares of its scalar components. What are they? 1, 2 and 3. So this will be 1 square plus 2 square plus 3 square into the vector that is I plus 2j plus 3k. So implies v cap unit vector along the direction of the given vector v is equal to 1 divided by square root of 1 plus 2 plus
1 plus 4 plus 9, because 1 2 square 3 square, so 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, so 1 plus 4 plus 9, 9 plus 1 10, 10 plus 4 is 14. Square root of 14 into I plus 2j plus 3k implies v cap must be equal to, yes, 1 divided by square root 14 is a scalar, तो इस स्केलर से हर किसी कंपोनेंट को मल्टीपल कर दो, क्या आएगा 1 into 1 by square root 14, that is 1 divided by square root of 14 into I plus 2 divided by square root of 14, 2 divided by square root of 14 into j plus 3 divided by square root of 14, 3 divided by square root of 14 into k. This is the unit vector v cap along the direction of proper vector v. Now we need to find actually the direction cosines of vector v. The scalar components are 1 by square root 14, 2 by square root 14, 3 by square root 14. So the scalar components of unit vector must be the direction cosines of vector v. Since we know that the direction cosines, since we know that the direction cosines of a vector, since we know that the direction cosines of a vector are the scalar components, are the scalar components of its unit vector. Since the direction cosines of a vector are the scalar components of its unit vector. What are the scalar components of unit vector? 1 by square root 14, 2 by square root 14, 3 by square root 14. So the direction cosines of vector v are ordered 3 tuple of 1 by square root 14, 2 by square root 14, 3 by square root 14. Therefore, direction cosines of vector v are, yes, ordered 3 tuple of 1 by square root 14, 2 divided by square root of 14 and 3 divided by square root of 14 must be the direction cosines of that given vector v. All about question number 12. Now lies another question, that is question number 13. Find the direction cosines of the vector joining the points. फिर से हमें डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ वेक्टर चाहिए, लेकिन अभी वेक्टर की जनरल फॉर्म नहीं दी हुई है, अभी इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. So in question number 13 we have question number 13. The given initial and final points of a vector PQ are the given initial and final points of a vector PQ are P of, yes, P of 1 2 minus 3, 1 2 minus 3 and Q of minus 1 minus 2 1, minus 1 minus 2 1. So we have a vector, proper vector, which is represented by the directed line segment PQ, means its initial point is P and its final point is Q. P has its coordinates as 1 2 minus 3 and Q has its coordinates as minus 1 minus 2 and 1. They are respectively the initial and final points of a vector PQ. We need to find the direction cosines of this vector PQ. So first we need vector PQ, after then we need a unit vector along the direction of PQ, and from that unit vector we can find the direction cosines, because the scalar components of that unit vector must be this direction cosines of vector PQ. So firstly we will calculate vector PQ. So इससे सबसे पहली बात जो ये यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, दैट इज हमें पहले पता होना चाहिए कि वेक्टर PQ किसके बराबर आएगा, फिर इसके अलोंग निकालेंगे यूनिट वेक्टर, और जो उस यूनिट वेक्टर के होंगे यस स्केलर कंपोनेंट, वही PQ वेक्टर के होंगे डायरेक्शन कोसाइंस. सो PQ वेक्टर मस्ट बी इक्वल, PQ वेक्टर इज एनी वेक्टर and we know that any vector is always equal to the, yes, position vector of its final point minus position vector of its initial point. So that's equal to position vector of Q
minus position vector of P, which is equal, Q is a point, its coordinates are -1, -2 and 1. What would be the position vector? Yes, -I, -2j plus k, क्योंकि x कोऑर्डिनेट के साथ i कैप, y कोऑर्डिनेट के साथ j कैप, k कोऑर्डिनेट j कैप और k ये z कोऑर्डिनेट के साथ k कैप, फिर आपस में एडिशन वो बन जाता है क्या? पोजीशन वेक्टर. सो Q हैज इट्स कोऑर्डिनेट्स -1, -2 and 1. व्हाट वुड बी द पोजीशन वेक्टर? -I, -2j plus k minus times position vector of P. P has its coordinates 1, 2, -3. The position vector must be I plus 2j minus 3k, implies PQ vector is then equal to, yes, minus I, that is -2i, -2j, that is -4j, plus k minus into minus is plus, so plus k plus 3k, that is plus 4k. This would be the vector PQ. So we need to find its direction cosinus, means first we need a unit vector along the direction of vector PQ. So therefore unit vector along the direction of PQ vector. Therefore unit vector along the direction of PQ vector must be equal to, which would be denoted by PQ cap. So PQ cap must be a unit vector along the direction of vector PQ, and that's equal to 1 divided by unit vector along a vector, 1 divided by its magnitude into the vector. So 1 divided by magnitude of PQ into PQ vector, and that's equal 1 divided by magnitude of any vector, non-negative square root of sum of squares of its scalar components, that is -2 square plus -4 square plus 4 square into the vector, and that is -2i -4j plus 4k. So implies PQ cap must be equal to, yes, 1 divided by non-negative square root of, हाँ जिगरा, -2 square is plus 4, -4 square is plus 16, and plus 4 square is 16. 16 plus 16 plus 4. 16 plus 16 is 32. 32 plus 4 is 36. So 1 divided by square root of 36 into -2i -4j plus 4k, which further implies that PQ cap must be equal to 1 divided by square root of 36, that is 6, because 6 are 36. So that is 1 divided by 6. अब ये 1 by 6 जो है बाहर मल्टीपल है, तो हर किसी कंपोनेंट को मल्टीपल कर दो, तो क्या आएगा जिगरा? -2 into 1 divided by 6, that is -2 by 6i, -2 by 6i, yes, -4 by 6j, -4 by 6j, हाँ जीरा, plus 4 by 6k, so plus 4 divided by 6 into k, which can be further written as PQ cap must be equal -2 by 6, 2 1s are 2 3s are, so -1 divided by 3i, minus 2 2s are 4, 2 3s are 6, so -2 divided by 3 into j, and plus 2 2s are 4, that is 2 divided by 3 into k. This must be the unit vector along the direction of vector PQ. But we need to find the direction cosinus of PQ. So the scalar components -1 by 3, -2 by 3, and plus 2 by 3 must be the direction cosinus of the given vector. But we know that, yes, but we know that the direction cosinus of a vector, are the scalar components. But we know that the direction cosinus of a vector are the scalar components of its unit vector.
therefore direction cosines of वेक्टर PQR, तो वेक्टर PQ की जो डायरेक्शन कोसाइनस होंगे वो क्या होंगे? ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ यस -1/3, so -1/3, yes, -2/3, so -2/3, and finally we have 2 divided by 3. So the direction cosinus of a vector PQ with its initial point P as 1, 2, -3 and its final point Q as -1, -2, 1 would be -1/3, -2/3 and 2 divided by 3. All about question number 13. Lies question number 14. Lies the question number 14 of the exercise, and show that the vector I plus j plus k is equally inclined to axes OX, OY and OZ. Very much important question this one is, as far your examination is concerned. This is an important question. We have to prove that a vector which has been represented in terms of its rectangular components, that is I plus j plus k. So we have a given vector I plus j plus k. Its scalar components along the axes must be 1, 1 and 1. So we need to prove that this vector V is equally inclined to all the three axes, positive axes OX, OY and OZ. Means it makes equal angles with OX, OY and OZ. So equal angles कहां पे आते हैं? डायरेक्शन एंगल्स में. डायरेक्शन एंगल्स किस में आएंगे? डायरेक्शन कोसाइनस में. डायरेक्शन कोसाइनस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर. सो हमारे पास जो गिवन वेक्टर है, सपोज उस गिवन वेक्टर को पहले v से डिनोट करेंगे. सो लेट द गिवन वेक्टर बी, let the given vector be v is equal to I plus j plus k. ये है हमारे पास गिवन वेक्टर v is equal to I plus j plus k. और हमें प्रूव करना है, शो करना है क्या? कि ये वेक्टर v जो है ये इक्वली इंक्लाइन है विथ OX, OY एंड OZ. यानी इक्वली इंक्लाइन है ये विथ द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. इक्वली इंक्लाइन का मतलब ये इक्वल एंगल्स बनाता है विथ यस OX, OY एंड OZ. तो हमें नहीं पता कि कौन से एंगल्स बनाता है विथ OX, OY एंड OZ. सपोज हम लेट करेंगे कि ये अल्फा बना रहा है विथ OX, बीटा बना रहा है विथ यस OY एंड गामा बना रहा है विथ OZ. तो वहां से आएगा अल्फा, बीटा एंड गामा, दैट इज द डायरेक्शन एंगल्स. तो उस डायरेक्शन एंगल्स में हम डायरेक्शन कोसाइनस निकालेंगे. उन डायरेक्शन कोसाइनस में जब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइनस एज पर द यूनिट वेक्टर, सो वहां से cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का वैल्यू आएगा. जब cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का वैल्यू आएगा तो उसमें से हम निकालेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा. अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा यानी तीनों बराबर आ गए तो हम क्या कहेंगे कि ये वेक्टर बनाता है इक्वल एंगल्स विद ऑल द थ्री एक्सिस. हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल एंगल्स बनाता है विद ऑल द थ्री एक्सिस. हमें नहीं पता कि इक्वल बनाता है या नहीं बनाता है. हम लेट करेंगे, सपोज ये अल्फा बनाता है विद पॉजिटिव x, बीटा बनाता है विद OY एंड गामा बनाता है विद OZ. लास्टली अगर हमें मिला कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, देन इट इज इक्वली इंक्लाइंड विद ऑल द थ्री एक्सिस. लेकिन उसके लिए हमें पहले निकालने पड़ेंगे इसके डायरेक्शन कोसाइनस. उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर के होते हैं स्केलर कंपोनेंट, वही प्रॉपर वेक्टर v के होते हैं डायरेक्शन कोसाइनस. सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ v, therefore unit vector along the direction of v is given by v cap, and that's equal to 1 divided by vector v, 1 divided by magnitude of vector v into vector v, which is further equal 1 divided by magnitude of a vector when that vector has been expressed in terms of its components, directly equal to non-negative square root of sum of squares of its scalar components. So 1 divided by non-negative square root of, yes Jigra, 1 square, because the scalar components are 1, 1 and 1. So 1 square plus 1 square plus 1 square into the vector that is I plus j plus k.
So implies v cap must be equal to, yes, v cap must be equal to 1 divided by square root of 1 plus 1 plus 1, that is 3 into I plus j plus k. तो implies v cap must be equal 1 by square root 3 से मल्टीपल कर दो तो क्या आएगा, 1 by square root 3 I plus 1 by square root 3 j plus 1 by square root 3 k. So 1 by square root 3 I plus 1 by square root 3 j plus 1 by square root 3 k. ये मिला जिगरा यूनिट वेक्टर v कैप along the direction of given वेक्टर v. लेकिन जो यूनिट वेक्टर v कैप के होते हैं स्केलर कंपोनेंट, वही प्रॉपर वेक्टर v के होंगे डायरेक्शन कोसाइनस. सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ vector v are, yes, what are they? Cos alpha, that is we have calculated 1 divided by square root 3, 1 divided by square root 3, 1 divided by square root 3. ये मिले हमें डायरेक्शन कोसाइनस by calculating the unit vector. अब हम लेट करेंगे, सपोज ये वेक्टर v जो है इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा विथ ox, बीटा विथ oy एंड गामा विथ oz. Let the given vector v, let the given vector v makes angles, let the given vector v makes angles alpha, beta and gamma with ox, oy and oz respectively. ox, oy and oz जो है that are actually the positive directions of x axis, y axis and z axis. और जो एंगल्स जो एक वेक्टर बनाएगा विद पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x axis, y axis and z axis, व्हाट आर दे? डायरेक्शन एंगल्स. तो यहां पे जो अल्फा, बीटा एंड गामा है ये बन गए डायरेक्शन एंगल्स. अब डायरेक्शन एंगल्स के साथ ऑपरेट कर दो कॉस, तो क्या मिलेंगे? डायरेक्शन कोसाइनस. देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ vector v are, what would be they? Ordered three tuple of cos alpha, cos beta, cos gamma. So it is direction cosinus. The direction cosinus of vector v must be, the direction cosinus of vector v must be cos alpha, cos beta and cos gamma. But here we have already evaluated the direction cosinus, that is the direction cosinus of v are this. हमने निकाले हैं इसके direction cosinus. तो सपोज ये कंडीशन जो है इसको हम फर्स्ट कंडीशन रखेंगे और ये कंडीशन जो है इसको हम सेकंड कंडीशन रखेंगे. ये भी है डायरेक्शन कोसाइनस, ये भी है डायरेक्शन कोसाइनस. तो इसका क्या मतलब कि cos अल्फा 1 by square root 3 के बराबर आएगा, cos बीटा 1 by square root 3 के बराबर आएगा और cos गामा 1 by square root 3 के बराबर आएगा. सो फ्रॉम कंडीशन इज फर्स्ट एंड सेकंड, from conditions first and second we have, yes jigra, what we have? Cos alpha must be equal to 1 by square root 3, cos beta must be again equal to 1 by square root 3, क्योंकि दूसरा डायरेक्शन कोसाइन cos बीटा, यहां पे दूसरा डायरेक्शन कोसाइन 1 by square root 3, यहां पे तीसरा डायरेक्शन कोसाइन cos गामा है और यहां पे तीसरा डायरेक्शन कोसाइन अगेन है 1 by square root 3. So cos gamma must be equal to 1 by square root 3. तो implies, हाँ जिगरा, इस कंडीशन और इस कंडीशन में, तीनों कंडीशंस में ऑपरेट कर दो बोथ साइड्स बाय cos इनवर्स. जब cos इनवर्स ऑपरेट करेंगे cos को, तो cos इनवर्स और cos बनेगी आइडेंटिटी फंक्शन, तो रहेगा क्या? अल्फा. सो अल्फा मस्ट बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 by square root 3, बीटा मस्ट बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 by square root 3 and gamma must be equal to cos inverse of 1 by square root 3. So alpha भी cos inverse 1 by square root 3 है, बीटा भी cos inverse 1 by square root 3 है, gamma भी cos inverse 1 by square root 3 है. Means alpha is equal to beta is equal to gamma. So implies alpha is equal to beta is equal to gamma. लेकिन हमने alpha, beta और gamma क्या लिए थे? The angles which the vector v makes with ox, oy and oz, वो सेम आ रहे हैं. इसका क्या मतलब कि वेक्टर v जो है होगा इक्वली इंक्लाइंड विथ, सो देयरफॉर द वेक्टर v is equally inclined with
OX, OY and OZ. The vector V is equally inclined with OX, OY and OZ. Means it makes same angle with all the three positive axes OX, OY and OZ. All about question number 14.